अब इस सेक्शन में हमने इससे पहले सेक्शन में डिस्कशन किया था अबाउट एडिशन, डिकम्पोजिशन एंड रिडॉक्स रिएक्शंस। इस सेक्शन में हम डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन आफ्टर डिस्प्रोपोर्शनेशन एंड फॉर्म प्रोपोर्शनेशन। So there are two types of redox reactions. One is the metal-metal displacement. Metal-metal displacement reaction means in these reactions one of the metal will displaces other metal from their compound, and other is non-metal displacement reaction. Means in this type of reaction one of the non-metal will displaces other non-metal from their compound. ऐसे स्टूडेंट्स आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन मेटल नॉन मेटल, हमने नहीं लिखा मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो अब उसका रीजन आपको मैं बता दूं। देखिए जो रिप्लेसमेंट होता है, रिप्लेसमेंट विल टेक्स प्लेस इन सेम कैटेगरी। एक ही टाइप, मेल विल रिप्लेस मेल, female will replace female, male do not replaces any female because characteristics of male and female are totally different. So any male do not having the ability to displace any non-female. Understood? Means अगर आप रिप्लेस एक आदमी को रिप्लेस करना चाहते हो तो वहां एक आदमी होना चाहिए कि उन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे होंगे। अब तुम एक आदमी को फीमेल से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो वैसे यहाँ पर ये यहाँ पर भी है, जब रिप्लेसमेंट होगा तो कंपाउंड ऐसे बना होगा, एक मेटल एक नॉन मेटल से, जिसमें मेटल पे होगा प्लस, नॉन मेटल पे होगा निगेटिव। अब आपने नॉन मेटल लगा दिया तो दोनों के पास निगेटिव है और निगेटिव निगेटिव का रिपल्सन हो जाएगा, कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होगा। हम इसके एग्जांपल पे बात करते हैं। जैसे हमने लिखा Zn plus CuSO4. This will give ZnSO4 plus copper. So in this reaction zinc has taken the place of carbon and zinc has taken the place of copper. So either zinc or copper, both are the metals. In this reaction one metal has taken the place of other metal. So this type of reaction is the metal-metal displacement reaction. Next is non-metal displacement reaction. So reaction is Cl2 plus KBr. So this Cl2 plus KBr will give KCl plus Br2. So initially chlorine was in homoatomic molecular form and bromine was associated with the potassium, but after the reaction chlorine was associated with the potassium and bromine is in homoatomic molecular form. It means during the reaction chlorine has taken the place of bromine, and chlorine bromine both are the non-metals. So this reaction is involving the non-metals, means the replacement of one non-metal by other non-metal. So this type of reaction is non-metal displacement reaction. Now moving towards the next reaction, that is fourth, which is disproportionation reaction. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है, आप इसको समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आप बेहतरीन तरीके से इसको देखिए। हमने लिया ये Cl2, हम इसकी रिएक्शन कराते हैं हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली से। तो पहले मैं आपको एल्कली बता दूं। देखिए बेस का मतलब होता है द सब्सटेंस व्हिच गिव्स OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, बट बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एज एल्कली। तो जो वाटर सॉल्युबल बेस है वो एल्कली है। तो हम जब क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली से, तो यहाँ से फॉर्मेशन होता है Cl माइनस और ClO3 माइनस, यानी यहाँ से फॉर्मेशन होता है क्लोराइड आयन और क्लोरेट आयन। स्टूडेंट ये एकदम बिल्कुल फिक्स रिएक्शन है। जब आप क्लास 12 में होंगे तो वो ये क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में और जो मेंस या एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी रिएक्शन है। कई बार इन पर क्वेश्चन प्रोडक्ट फॉर्मेशन को लेकर के आता है, कई बार इन पर क्वेश्चन
बैलेंसिंग को लेके आता है। तो अब हमने इसकी रिएक्शन कराई, चलिए हम देख लेते हैं कैसे। तो देखिए ये आपका Cl2 है, यहाँ पे क्लोरीन का सिंगल बॉन्ड है, तो उससे इलेक्ट्रॉन का ना तो शिफ्टिंग होगा ना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस होगा, यानी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। ये क्लोरीन कन्वर्ट हुआ क्लोराइड आयन में, और क्लोराइड आयन का चार्ज है -1, सो इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। दूसरे में क्लोरीन कन्वर्ट हुआ क्लोरेट में, तो जनरली क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, बट इन कंपाउंड्स विद द ऑक्सीजन और इन इंटर हैलोजन और विद द कंपाउंड्स ऑक्सी एसिड क्लोरीन विल शोस वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने कंसीडर किया x, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, तो 3 का हो गया -6, और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर टोटल चार्ज के बराबर, टोटल चार्ज है यहाँ पे -1। तो इस तरीके से हमें मिला x इक्वल टू -1 प्लस 6, यानी x इक्वल टू कितना हो गया +5। तो अब देखिए इस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट है Cl2 का एक एलिमेंट क्लोरीन क्लोराइड आयन में लेके रिड्यूस हुआ, इस क्लोरीन से क्लोराइड आयन बनने में ऑक्सीडेशन नंबर हो गया कम, और Cl2 से ClO3 बनने में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया ज्यादा। तो देखिए यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट का एक पर्टिकुलर एलिमेंट एक प्रोडक्ट में हुआ है रिड्यूस, एक प्रोडक्ट में हुआ है ऑक्सीडाइज। तो जब एक रिएक्टेंट का एक ही एलिमेंट दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है, तो हम उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और यहाँ पे मैंने कंडीशन ली है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड की। दूसरी रिएक्शन भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने लिया Cl2 में, इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कली से। अब की बार जो Cl2 है इट विल कन्वर्टेड इनटू Cl- प्लस OCl-। देखिए इट इज क्लोराइड आयन, इट इज हाइपोक्लोराइड आयन and it is chlorate ion. So in Cl2 chlorine is in homoatomic molecular form, so its oxidation number will be 0. In chloride ion its oxidation number is -1. In OCl- we will calculate the oxidation number. So for chlorine it is X and oxidation number of oxygen is -2, and total oxidation number of all elements in the compound is equal to the total charge. In this way we will get X -2 is equals to -1. So we get X equal to +1. Means in this compound, in this ion, oxidation number of chlorine is +1. So one element of one reactant means chlorine of Cl2 molecule, chlorine atom of Cl2 molecule is undergoes, means chlorine atom of chlorine molecule undergoes reduction in chloride ion, and it also undergoes oxidation in hypochlorite ion. So in this reaction also one element of one reactant has undergone reduction as well as oxidation in two different products. So this reaction is also a redox reaction. And this type of redox reaction is called as disproportionation reaction. Now moving towards the last, which is comproportionation reaction. Comproportionation reaction is just reverse of the disproportionation reaction. In disproportionation reaction, one element of one reactant will undergo oxidation and reduction in two different products. But in comproportionation, same element in two different reactants get oxidized and reduced in same single product. So reaction is like this. It is H2S plus SO2 means hydrogen sulfide plus sulfur dioxide, and this will give you sulfur plus water, that is H2O. So in hydrogen sulfide, in the compound of hydrogen shows the oxidation number of +1. So for 2 hydrogen it is +2. So oxidation number of sulfur in this compound is -2. In sulfur dioxide, oxygen having the oxidation number of -2, so sulfur have the oxidation number of +4. Now this H2S or SO2, both are
to 0. So it is one element sulfur in two different reactants which get oxidized or reduced in same single product. So this reaction is the redox of disproportionation, or this reaction is called as comproportionation. Now moving towards the next. In note, I will tell you about intra and intermolecular redox reaction. Intra and intermolecular redox reaction. Intramolecular redox reaction. Students, you know intra means within. So if redox reaction, both redox reaction is taking place within one molecule, then that type of redox reaction is called as intramolecular redox reaction. For example, it is KClO3, that is potassium chlorate. Now this potassium chlorate is heated, and by the heating of potassium chlorate, we will get potassium chloride plus oxygen. Now moving towards the calculation of oxidation number, potassium shows oxidation number of +1 in their compound, and oxygen shows oxidation number of -2. So in this way, calculate the oxidation number of chlorine. So for one potassium it is +1, and for chlorine we have considered X. There is 3 chlorine, so it is -6, and total charge is 0. So we get the equation 1 plus X minus 6 equals to 0. In this way, we get X equal to +5. Means we get that oxidation number of chlorine in potassium chlorate is +5. When it is heated, then it converted into potassium chloride or oxygen, and in potassium chloride oxidation number of chlorine is -1, and oxidation number of oxygen is 0. So in this reaction, oxidation number of chlorine changes from +5 to -1. Means one of the element of one reactant has undergone reduction, while oxidation number of oxygen has increased from -2 to 0. So chlorine has undergone reduction and oxygen has undergone oxidation. So this sequence is the complete redox reaction taking place within the same molecule. That is why this is called as intramolecular redox reaction. Okay. So students, after that हमें जो क्वेश्चन आते हैं, ये तो हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये हमें कैटेगराइज करना होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, और विच विल बिहेव एज बोथ. ये आप समझते हैं बहुत अच्छे से. जैसे मैं जब आपको ऑक्साइड्स पढ़ाता हूँ तो वहां पे बोलता हूँ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल. तो जो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है दे आर द एसिडिक ऑक्साइड, जो बेस की तरह बिहेव कर रहा है दे आर द बेस. बट सम oxides are there which will behave like acid as well as base. So the oxides which are behaving like acid as well as base, they are the amphoteric oxide. Or some peoples are there, some oxides are there, they do not have any effect, either any matter is there or not, so they are the neutral oxide. वैसे ही जब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की रिडॉक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर की, तो कुछ मैटर का रिडॉक्स प्रॉपर्टी फिक्स होता है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे. कुछ का फिक्स होता है दे विल बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कंट्रास्टिंग बिहेवियर शो करते हैं. वो सामने वाले को देख के बिहेव करते हैं. सामने वाला गुस्सैल है तो थोड़ा शांत हो जाएंगे, या सामने वाला शांत है तो वो थोड़ा गुस्सैल हो जाएंगे. तो ये जो बिहेवियर शो करते हैं वो आपका हो गया इंटरमीडिएट. मींस इंटरमीडिएट they will shows या they will behaves as both oxidizing agent as well as reducing agent depending on the other. तो अब देखिए हम इस बात को कैसे जाने कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा. इसके लिए देखिए हमारे पास दो तरीके का क्वेश्चन आता है. एक क्वेश्चन आता है मैटर के फॉर्म में, यानी आपको कंपाउंड या एलिमेंटल फॉर्म दिया जाएगा, वहां से आपको डिसाइड करना होगा इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग
बोथ। और दूसरा क्वेश्चन आता है, आपको केमिकल रिएक्शन दिया होगा, एक रिडॉक्स रिएक्शन दिया होगा, और उस रिडॉक्स रिएक्शन में आपको डिसाइड करना है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पहले हम रिएक्शन से बात करते हैं और मैं आपको बता दूं, द स्पीसीज विच अंडरगोज रिडक्शन, जो रिडक्शन में जाएगा दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द स्पीसीज विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। यानी जिस स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज होने का चांस दे रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो दूसरे को रिड्यूस होने का चांस दे रहा है, यानी वो कौन हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आइए हम इसको पहले एक क्वेश्चन लेके बात करते हैं। हमने लिखा MnO4 माइनस प्लस NO2 माइनस, यानी पोटेशियम। चलिए दूसरा रिएक्शन लेते हैं। सो MnO4 माइनस प्लस SO3 माइनस 2, दिस इज कन्वर्टेड इनटू Mn2 प्लस और प्लस SO4 माइनस 2, यानी परमैंगनेट आयन की सल्फाइड आयन से रिएक्शन हुई और वहां से बन गया मैग्नीज आयन और सल्फेट आयन। अब आपसे पूछा है इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए इस रिएक्शन में MnO4 माइनस Mn में कन्वर्ट हो रहा है और MnO4 माइनस से Mn में कन्वर्जन हुआ तो MnO4 माइनस में क्या हो गया, रिडक्शन। और मैंने बोला जिसका रिडक्शन वो कौन, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब SO3 माइनस SO4 माइनस में SO3 माइनस 2 SO4 माइनस 2 में कन्वर्ट हो रहा है तो SO3 माइनस 2 पर एक ऑक्सीजन